A very good afternoon to all of you and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Sunday at 3 p.m. we are having weekly current affairs discussion. So today we are going to discuss the September 4th week current affairs. So let us begin with today's class. Okay. Now, those who have not watched the previous videos, because sometimes I have seen people asking the question कि sir, how to cover backlogs? पुराना कैसे देखें, कैसे cover करें? मैंने अभी शुरू किया है. I want to do revision, etc. So what you are supposed to do is first, please subscribe to our channel. पहले आप channel subscribe कर दीजिए. Go to the playlist, ठीक है? Scroll down, नीचे जाओ, and you will get this one. ना weekly current affairs. यहाँ पे view full playlist पे click कीजिएगा. You will get these videos. So since January we have put the videos, so you can watch all those videos. वो सारा आप देख सकते हो, ठीक है? Second thing, एक चीज और बताना चाहूंगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये वाला प्लेलिस्ट है, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये सब देख लीजिए क्लासेस, बिकॉज वी हैव सीन इन द लास्ट 2 years वी हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. तो ये भी आप देख लीजिएगा क्लासेस. एंड इफ यू हैव लेस टाइम, मान लीजिए आपको कम टाइम में और आपको रिवाइज करना है, तो यहाँ पर ये वाली क्लास है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये मंथली करंट अफेयर्स है. सो इन वन क्लास आई हैव कवर्ड द एंटायर 1 month. You can watch this also. ठीक है. Let us begin with the first question. Yes, welcome to the class. Krishi Sasdeva, Kartikeya, happy Diwali to all of you. Okay, so I hope that you are celebrating the festival in a happy mood, and I believe that you will be getting good college this time. है ना? So let's pray. Okay, let's begin with the first question. Who has been recently selected for Dara Saheb Phalke Award 2023? But it was given this year, and recently it was given on the same ceremony in which 71st National Film Awards ceremony. I mean the same ceremony, है ना? Where this award was given. Mr. Mohan Lal is an actor from Malayalam, which is actually from the state of Kerala. So C is the right answer to this question, है ना? National Film Awards की ceremony होती है, उसी में दिया था award. ठीक है. Last year Mr. Mithun Chakravarti was given the award. So important है, this is a lifetime achievement award which is generally given to senior actors. ठीक है. Yes. Let's move on to the next one. Where is India's first overseas defense factory being inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh? Casablanca, Morocco, Madrid, Spain, Johannesburg, South Africa, Nairobi, Kenya. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब? आदोक्ष, अगर आपके पास टाइम है यू कैन वॉच वीकली इफ यू हैव टाइम. इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन वॉच मंथली, बिकॉज मंथली में थोड़ा सा मैंने कट किया है, मतलब कुछ क्वेश्चंस को मैंने रिमूव किया भी है. ठीक है. सो इट डिपेंड्स. इफ यू हैव लेस टाइम देन गो फॉर मंथली करंट अफेयर्स, अदरवाइज यू कैन गो फॉर वीकली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन ऑप्शन ए, कैसाब्लांका, मोरक्को इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो टाटा की कंपनी TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दिस इज मेकिंग. ओवरसीज का मतलब होता है आउटसाइड इंडिया. कहां लिखा है? यहाँ लिखा है ना, आउटसाइड इंडिया, अब्रोड. ठीक है. डिफेंस फैक्ट्री वी आर सेटिंग अप. सो TASL इन कैसाब्लांका है ना, which is actually in Morocco. So here is India. This is Africa continent, and this is Morocco. So Morocco में Casablanca is there. That is what you should be knowing. Okay. Tata Advanced System Limited, along with Morocco's Royal Armed Forces. The next is, which of the following countries has recently become the 60th country to ratify High Seas Treaty, and now it has come into force because the charter of this law said, this treaty said that at least 60 countries have to ratify. High Seas Treaty is also called as BBNJ, Biodiversity Beyond Natural Jurisdiction, BBNJ. Yes. High Seas Treaty. So the recent country to ratify is Morocco. Yes, Krishi Sasdeva will explain. नहीं, आदोक्ष वीडियो आप देख लो, उसके बाद एक बार मंथन पढ़ लिया करो. Please read the मंथन्स, है ना? Because after watching the class, when you read manthan, it will be comparatively easy, है ना? So C is the right answer.
यस, हाई सीज ट्रीटी का मतलब होता है, आई हैव टोल्ड यू, बट लेट मी टेल यू, देखो जनरली क्या होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, जैसे ये इंडिया का कोस्ट लाइन है, सो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, है ना, हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक, वी हैव डन इट राइट, एंड अंडर यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 की ट्रीटी के अंदर। इसके बियॉन्ड का क्या बात है, व्हाट अबाउट बियॉन्ड दिस, है ना, तो वो तो और एरिया जो इंडिया के अंदर में कंट्रोल में कहलाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट बियॉन्ड दिस, सो फॉर एग्जांपल अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये किसका वाटर है, हु इज कंट्रोलिंग इट, right? So this is how to protect the biodiversity of these, because these islands, these oceans do not belong to any country. So for that, actually, people should come, all the countries should come together. Yes, B, B and J, right? To protect biodiversity, है ना, biodiversity beyond natural jurisdiction, यानी high seas, यानी जो किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है वाटर, उसको अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहें, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, all the countries should come together, that is the idea behind this, है ना, so that is what you should be doing. हाँ, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी तब परमिशन लेना होगा when you want to extract something, ठीक है कार्तिक, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हैज गॉट परमिशन इन इंडियन ओशन टू एक्सट्रैक्ट पॉलीमेट्रिक नोडुल्स, ठीक है, इन दैट केस यू नीड परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, बट व्हाट अबाउट प्रोटेक्टिंग द मैरीन बायोडाइवर्सिटीज, है ना, सो फॉर दैट दिस एग्रीमेंट हैज बीन साइंड, ठीक है, it has been ratified by 60 countries, so now it has come into force. The right answer is option C. Let's move on. Who among the following received Presidential Medal of Freedom from US President Donald Trump? Presidential Medal of Freedom. Yes, Karthik, right. Ben Carson is the right answer to this question. Option B. Neurosurgeon and former US Secretary of Housing and Urban Development. Trump says he will award Presidential Medal of Freedom to Ben Carson. Okay. So B is the right answer to this question. Yes, Karthik, right. Huh? The next is who among the following recently won Azerbaijan Grand Prix Formula 1 race? Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell. What is the right answer? The right answer is option A, Max Verstappen, है ना, so अक्सर ये जीते, है ना, yes, A is the right answer. Next is who among the following became the first Indian men's bowler to reach 100 T20 international wickets? T20 में तो वही 20 ओवर वाला 20 ओवर मैच 2020. The right answer is Arshdeep Singh, so C is the right answer. First Indian player to reach 100 wicket in T20. Okay, yes, Karthik, you're right. C is the right answer. Let's move on to the next one. What was the maiden, any first edition of bilateral, मतलब between the two countries, exercise Indian Navy and Hellenic Navy called? Hellenic कौन से कंट्री हो कहते हैं, उसी से पता चल जाएगा. Yes, Hellenic ग्रीस को कहते हैं ना, हेलेनिक आर्ट्स भी होता है, हेलेस्टिक आर्ट, है ना, सो इंडो ग्रीक मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो बायलैटरल मैरीटाइम है, सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना, आईएनएस डबल अराइव्ड एट सौदा बे, ग्रीस. यस कार्तिक, सिद्धिविज, यू आर राइट, कार्तिक सचदेवा, ए इज द राइट आंसर, है ना, सो वेयर इज इंडिया, दिस इज ग्रीस, ये सौदा बे, ठीक है. The next is what is Maitri 2.0? Recently in news. Official name is Hellenic Republic, right? Maitri 2.0. Yes, Vanisha Mantri, you're right. Brazil, India cross incubation program in agri-tech. Agri-tech मतलब B से तोड़ दो, agriculture, technology. So B is the right answer to this question. Yes, Vanisha, Kartikya, Adrija, Siddhi, you all are right. B is the right answer. Let's move on. What is the name of India's first integrated public transport ticketing system? Metro 1, Chennai 1, Smart 1, Smart Ticket, India Travel App. Maitri 2.0 was related with Antarctica. अच्छा वो स्टेशन था अंटार्कटिका में, मैत्री स्टेशन इन अंटार्कटिका.
1999, yes. कृषि सचदेवा जो आप बता रहे हो ना, मैत्री जो है ना एक स्टेशन भी है अंटार्कटिका में, इंडिया की तरफ बनाई है. So the right answer is here, Chennai 1. So B is the right answer to this question. ठीक है ना? So that's what you should know. Let's move on further to the next one. Who among the following Syrian leader attended UN General Assembly for the first time in 60 years? Well, someone else actually for the past almost 23-24 years. Bashar al-Assad was the president, and he was removed in December 2024. And Ahmad al-Shara. So B is the right answer. So he's the new president. Golani also called Abu Muhammad Golani or Ahmad al-Shara. Presidency is 2025. Okay. ठीक है. The right answer is B is the right answer. ठीक है. And आप देख सकते हो for the past 24 years, Bashar al-Assad was the president, but he was overthrown. Okay. ठीक है. So here is India. This is Syria, and this is Damascus. The capital of Syria here you'll find. ठीक है. Let's move on to the next one. Which of the following countries launched world's first Bitcoin bank? Yes, Krishi Sachdeva, you are right. हाँ, मैत्री 2.0 जो है वो जो सेकंड फेज है वो एक स्टेशन का भी नाम है अंटार्कटिका में, जो कि जनवरी 2021 में ओपन होगा. दैट इज अ प्रपोज्ड. ठीक है, वो भी सही है. इंडिया टू रिप्लेस मैत्री विद मैत्री 2. कृषि सचदेवा जो आपने लिखा वो सही है. दैट इज आल्सो ट्रू, है ना. सो हियर द राइट आंसर इज एल साल्वाडोर. ये मैंने आपको कई बार बताया है. देखो ये एल साल्वाडोर, अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका. सो इन्होंने दे हैव मेड बिटकॉइन अ लीगल टेंडर. ठीक है, बस ऐसे याद रखना, इनको बिटकॉइन बहुत पसंद है. ठीक है, तो इन्होंने बिटकॉइन की सिटी भी बना दी, तो इन्होंने बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस भी रख दिया, इन्होंने बिटकॉइन का बैंक भी बना दिया, सेंट्रल बैंक, क्या क्या बना दिया. ठीक है. हाँ, सैन साल्वाडोर इज इट्स कैपिटल. ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, इससे ऊपर सब नॉर्थ अमेरिका होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन, है ना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हु इज हिमांशी तोकाज? जूडोका. हाँ, इंडिया फर्स्ट फीमेल जूडोका टू रैंक वर्ल्ड नंबर 1. सो जूडो जानते हो ना, उसी से जूडो का है. वही जूडो आई थिंक कराटा टाइप समथिंग होता है, स्पोर्ट्स का है. ठीक है, दिल्ली के मोनेका विलेज से बिलोंग करती है ना. हाँ, बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन. व्हाट वाज द थीम चूजन फॉर नेशनल आयुर्वेदा डे? आयुष मिनिस्ट्री सेपरेटली बनाया गया है ना, आयुर्वेदा को प्रोवाइड करने के लिए. सो नेशनल आयुर्वेदा डे का थीम क्या था? The right answer is option B, Ayurveda for people and planet. Yes, Manisha, Karthik, you all right, है ना. 23rd सितंबर को सेलिब्रेट किया था आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट. यस, कार्तिक, कृषि सचदेवा, नागलक्ष्मी, यू ऑल राइट. द नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व्ड? The right answer is option C, 23rd September again. And C is the right answer. Yes, Siddhivich, Nagalakshmi, you all right. इसको कहते हैं साइन लैंग्वेज. दिस इज फॉर दोज हु कैनॉट लिसन और स्पीक. जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है. दैट इज व्हाट यू शुड नो. The next is which of the following 3 African countries have recently decided to withdraw from International Cricket Council? International Criminal Court. So we have already taken a separate class for this, and it is headquartered in The Hague. It is not same as ICJ. It has nothing to do with ICJ. It was formed as a result of Rome Statute 2002. So these are actually the countries that have decided to withdraw because they say that this is actually selective or biased against us and all. तो मैंने इस क्लास में बताया भी था, there have been conflicts about Burkina Faso, Mali, Niger, and conflicts in Africa, etc.
हाँ, तो ये पढ़े माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ठीक है। साहिल रीजन, यस, दिस रीजन इज कॉल्ड एज साहिल रीजन, वही उसी रीजन का हिस्सा है, राइट। लेट्स मूव ऑन, विच आर द फॉलोइंग एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? यस, TASL, अभी मैंने बताया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, वही कैसाब्लांका मोरक्को में, है ना। ओवरसीज मतलब आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। ये तो पुराना है ना, सी इज द राइट आंसर। ये ये वाला पुराना है, ठीक है ना। सो सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन, व्हिच आर द फॉलोइंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस recently signed a trade pact CEPA with European Union? हाँ, मोरक्को की कैपिटल रबत है। CEPA मतलब comprehensive economic partnership agreement, so it is a sort of a free trade agreement. You have signed CEPA with UAE. Very good question, Deva. So right answer is Indonesia और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना, जिसने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया है ना। सो बी इज द राइट आंसर, गुड, है ना। सो यहाँ पर इधर इंडोनेशिया मिलेगा यहाँ पे, और ये तो यूरोपियन यूनियन है ना। यूरोपियन यूनियन कई बार मैंने डिस्कशन किया, 27 मेंबर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज का मेंबर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? Yes, Indonesia is making a new capital, Nusantara. Very good, Karthik. So the right answer is 38. ठीक है। So rank 1 Switzerland, India's rank 38, है ना। Released by WIPO, World Intellectual Property Organization, है ना, Global Innovation Index. So B is the right answer. Yes, Nagalakshmi, Vanisha, Karthik, yeah, you all are right. The next is, how many additional LPG connections will be provided under Pradhan Mantri Ujjwal Yojana during this financial year? Current financial year हम लोग इसमें 2025-26 में चल रहे हैं ना। The right answer is option D, 2025 lakh, है ना, 25 lakh additional LPG cylinders will be given. So D is the right answer. Next, what is the theme of World Maritime Day? The right answer is option C, our ocean, our obligation, our opportunity. C is the right answer, है ना। 25 September World Maritime Day, ये इसका थीम था। Yes. Next है, where is the world's first Ayurvedic excellence center being set up? हरिद्वार, वाराणसी, जयपुर, ऋषिकेश। The right answer is option C, Jaipur. Yes. I haven't got a right answer. C is the right answer, है ना। Center of Excellence of DNA barcoding, etc. National Institute of Ayurveda in Jaipur. The next is, India is the first country outside US to receive which Google feature? Search Assist, Google Now, Search Live, Live Translate. What is the right answer? The right answer is Search Live. Yes, Karthik, Adrija, you both are right. C is the right answer. You can download Google Lens app and then you can try it, that thing. ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है।
AI का फ्यूचर है, देखिएगा ट्राई करके, है ना. 7 Indian languages actually they have said. नेक्स्ट है who among the following actress won best actress award in 71st National Film Awards. इसमें मैंने सेपरेट क्लास लिया है. And at the same award ceremony actually Dara Saif Phalke award was given to Mr. Mohan Lal. The right answer is Rani Mukherjee. A is the right answer. For what film? तो ये सारा आप याद रख लीजिएगा. बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर जवान, बेस्ट अनदर बेस्ट एक्टर विक्रांत मासे फॉर 12th फेल, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन फॉर केरला स्टोरी. बस इतना कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट ones that you should remember. Yes, Karthikeyan and Krishi Sajjava. Very good. Let's move on. Dickie Bird, who passed away at the age of 91, was related with which sports? The right answer is cricket. C is the right answer. Yes, Karthikeyan, Nagalakshmi, Atija, you are right. And I think initially he played some matches also, but ideally, I mean, he was famous actually for being an umpire. So C is the right answer. Being a cricket umpire, he was famous. And from English means he was from England. Let's move on to the next one. Which of the following companies unveiled world's first hydrogen-powered self-driving tractor? Mahindra, John Deere, Kubota, Toyota. What is the right answer? Yes, very good. Kubota. आप देख सकते हो ये ट्रैक्टर है, काफी ह्यूज लग रहा है, एंड सेल्फ ड्राइविंग है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर इन ओसाका जो है जापान में जगह है. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. Let's move on to the next one. From where was India's first Agni P Prime, an Agni Prime missile recently test fired for the first time? और इसका रेंज जो है इसमें देखा गया 2000 किलोमीटर. क्या व्हाट वाज सो स्पेशल, क्या खास था जो अभी टेस्ट किया गया अग्नि पी मिसाइल? हाँ जी, रेल बेस्ड. यस, वेरी गुड, ग्रेट. सो इस तरह आप देख सकते हो ट्रेन से लॉन्च किया गया, एंड लॉन्च के बाद की आई थिंक फोटो आपको मिल जाएगी नेट पर, वो वीडियो मिल जाएगा. So that is what stealth feature. हाँ, सब ठीक है, but the main thing is rail based mobile launcher. This is the right answer to this question. हाँ, stealth भी है, increase mobility, stealth etc. तो इससे ये होगा ना कि हाँ मूव करा के अगर ले जाना होगा कहीं और तो easily, है ना. इंटरमीडिएट रेंज है ना, अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर का रेंज है दिस वन का, which was launched from rail based mobile launcher. Okay. हाँ, तो आप पढ़ सकते हो. This is the tweet of Defense Minister Mr. Rajnath Singh. Let's move on. Who has been elected as the new Speaker of Goa Legislative Assembly? Yes, just to remember it. नाम याद रखने में हेल्पफुल होगा देखो. Just for remembrance purpose, I have highlighted like this so that you can remember in the exam hall. ठीक है, so A is the right answer to this question. Okay, Mr. Ganesh Gaonkar. Because the earlier one, Mr. Ramesh Tavadkar, he actually joined as a minister. So that's why there needs to have a new speaker. The next is India's first dugong conservation reserve is in which region? And recently it was recognized by IUCN. So this dugong is also called as a stellar sea cow. Sea cow भी कहते हैं इसको. That is what you should know. It is located in which region? Right answer is Park Bay. है ना, ये पार्क स्ट्रेट कह सकते हो. सी इज द राइट आंसर. ये तमिलनाडु. राइट, कार्तिकेय कृषि सचदेवा यू आर राइट. हाँ, in Park Bay begins global recognition at IUCN Congress. Here it is dugong. हाँ, सो यहाँ पर पार्क स्टेट है.
है ना. IUCN has formally adopted a motion recognizing India's first dugong conservation reserve, although it got opened in 2022, I think. ओपन पहले हुआ था 3-4 साल पहले, बट अभी रिकॉग्नाइज किया गया. सी कॉ भी कहते हैं, है ना, वल्नरेबल कैटेगरी में. ठीक है. यस, मैमल होता है, मैरीन मैमल, सो नॉट अ फिश. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी लॉन्च डैश मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद स्टेट. So almost 10,000 rupees being distributed to almost, I think, 75 lakh women in the state of Bihar. So right answer is option C. Bihar is the right answer to this question. ठीक है. So what are the eligibility? आप देख सकते हो. So eligibility criteria. So the idea is actually to provide these money so that they can open a business. That is the idea behind this. 7.5 million in 75 lakh women. And if their business becomes successful, then later on they'll be paid. They'll be given 2 lakh rupee interest-free loan also 6 months later. Okay, let's move on. What key change has RBI mandated for digital payment authentication from April 1, 2026? Yes, Krishi Sachdeva, you're right. Actually, ये वाला बोल रहे हो ना. कभी मौका मिलेगा तो एक सेक्शन पढ़िएगा. आई एम गिविंग योर होमवर्क. Since someone is writing about this. Section 123 of representation of, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, representation of People's Act 1951. इसको सर्च कीजिए गूगल पर और पढ़िएगा. It defines corrupt practice before the election. तो इसको पढ़िएगा जब भी मौका मिलेगा. हाँ, फ्रीबीज जो वाला कॉन्सेप्ट हो यहीं से आता है, फ्लो होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रीबीज एटसेट्रा. यू कैन रीड इट, होमवर्क है. लेट्स मूव ऑन. व्हाट की चेंजेस हैज आरबीआई मैंडेटेड फॉर डिजिटल पेमेंट बाय अप्रैल 1, 2026? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. हाँ, यस कार्तिक, यू आर राइट. वो इसी सेक्शन में था. इंदिरा गांधी जी वाज आल्सो फाउंड गिल्टी, लेकिन वो करप्ट प्रैक्टिस जो रीजन था वो अलग था, वो फ्रीबी रीजन नहीं था. देयर वाज सम अदर रीजन, बट यस उसी सेक्शन के अंदर था. यस कार्तिक, यू राइट. ठीक है. वैसे आप इसको पढ़िएगा, ये वाला सेक्शन ऐसे अक्सर कई बार न्यूज में रहता है. ठीक है, रीड दिस आफ्टर द क्लास. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब इसका स्ट्रिक्टनेस और बढ़ा दिया. जैसे मैं आपको बताता हूं. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. अगर आप एटीएम कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड, वो एटीएम कार्ड कह लो, तो इसमें कितना फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जनरली? लेट्स से यू वांट टू विथड्रॉ 2,000 रुपीस फ्रॉम द एटीएम. तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन आर देयर? जस्ट वांटेड टू नो यू वेदर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, समझ में आता है कि नहीं? सो अगर आप 2,000 रुपए निकाले जा रहे हो, इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है. मतलब क्या? लेट मी एक्सप्लेन. आपको नहीं, एक नहीं, 2 होता है. एटीएम से पैसे निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? फर्स्ट कंडीशन, आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, राइट? और उस एटीएम कार्ड से लिंक जो बैंक है उसमें पैसा होना चाहिए. ऑफ कोर्स दैट इज द कंडीशन. तो फर्स्ट थिंग इज एटीएम कार्ड होना चाहिए. सेकंड, आपको उसका पिन पता होना चाहिए, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, किसी बैंक में था शायद, उसमें ये होता था कार्ड एंड पिन, राइट आदर्श? हाँ, कि इफ यू आर विड्रॉइंग मनी फॉर मोर देन 10,000 रुपी तो ओटीपी भी आता था. पता नहीं अब है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. तो वो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ओटीपी भी मांग रहे हैं तो. ठीक है, ठीक है. तो दैट्स व्हाट. हाँ, मैं भी समझा कि आप समझोगे पिन, लेकिन कार्ड भी तो होना चाहिए. अगर आपके पास कार्ड ही नहीं है तो आप कहां से पैसे निकालोगे? सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज. तो इस तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट. जब भी ऐसे लगे तो आप समझ लेना कितना फैक्टर ऑथेंटिकेशन है विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक. इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वगैरह बनाया जा रहा है. इसको पढ़िएगा, 1 अप्रैल 2026 से थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस किया जाएगा. एक्चुअली क्या है ना, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड्स एटसेट्रा, उसको बचाने के लिए ये सब है. ठीक है. नेक्स्ट है, among the following Indian cricket became the first male to sign with the BBL team. ये ऑस्ट्रेलिया का लीग है, आईपीएल टाइप समथिंग समझ लो, ऑस्ट्रेलिया का. यस, रविचंद्र अश्विन, सी इज द राइट आंसर. ठीक है. बिग बैश लीग फॉर सिडनी थंडर्स. सो सिडनी जो आपको पता होगा है ना, एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलिया, है ना? यू कैन रीड इट.
Let's move on. Which of the following two locations in Sikkim will now be opened for domestic battlefield tourism? Yes, डोकला एंड चोकला और चोला है ना. डोकला आपने सुना होगा, डोकला में स्टैंड अप हुआ था 2017 में, वही वाला है. ठीक है, तो ये सिक्किम में यहीं पे मिलेगा आपको दोनों जगह, डोकला एंड चोला. और यहीं पर आपको वो भी मिलेगा नाथुला, ये तो शायद आई थिंक ओपन है ऑलरेडी. नाथुला पास सिक्किम में सब मिलेगा. ला मतलब पास ही होता है, तो नाथुला पास ऐसे बोल देते हैं. डोकला भी यहीं पर है, जस्ट नीचे में यहाँ पे. डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्मी. इसको पढ़िएगा कभी मौका मिले तो. लेट्स मूव ऑन. हाँ, वही नहीं, भूटान में नहीं, यही है सिक्किम में सब, यही सिक्किम वाले रीजन यहाँ पर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. बैलोन दी और, ये बहुत फेमस अवार्ड है, फ्रांस में दिया था, फुटबॉलर्स को दिया जाता है. वेरी फेमस अवार्ड. तो इस साल 2025 में किसको दिया गया? यस, वेरी गुड, उस्मान देम्बेले. So C is the right answer. For this is his football team, Paris Saint-Germain. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज भूटान्स फर्स्ट एवर रेल लिंक. रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है इंडिया को, इंडिया एंड भूटान को, है ना. सो द टू प्लेसेस एक्चुअली ये है गोगराजार गैलेप्यू एंड दूसरा वाला बनारहाट समतसे भी है. ठीक है, दो है, बनारहाट समतसे लाइन और कोकराझार गैलेप्यू. ठीक है, सो कोकराझार आसाम में और बनारहाट वेस्ट बंगाल में. ठीक है, यहां दिखाता हूं. देखो ये जो है ना, ये आसाम है, मतलब यहां तक आसाम है, सॉरी ये वाला, दिस इज आसाम. ठीक है, आसाम में गैलेप्यू से बनारहाट को कनेक्ट किया जा रहा है. नहीं सॉरी, ये बनारहाट थोड़ी, ये वाला जो है वो कोकराझार है, सॉरी कोकराझार आसाम में. ठीक है, और बनारहाट वाला इधर है, जो इधर है, इसके बाद ये वाला हिस्सा वेस्ट बंगाल का है. ये सिक्किम हो गया, ये वाला पूरा वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला दिस वन. ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल का एरिया है. तो वेस्ट बंगाल में बनारहाट है, ये कनेक्ट हो रहा है सामते से भूटान में. ठीक है, इज इंडिया पेइंग द मनी? हमको देखना पड़ेगा हु इज पेइंग द मनी. आई नीड टू चेक इट. नॉर्थ फ्रस्ट्रेटेड सेड there will be developed under 4033 crore railway infrastructure project will boost economy and tourism. I need to check कि पूरा इंडिया का दिया हुआ है कि is there any share from Bhutan, वो तो चेक करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट है the new species of finless snake eel was named after which district in India? ईल जो होता है सांप टाइप का होता है ना, तो कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है. सो बी इज द राइट आंसर. B is the right answer to this question. ठीक है, yes Karthikeya Nagalakshmi, all right. The next is the first mycologist to head botanical survey of India is Kanar Das, HR Rao, AK Sharma, PK Saha. माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं जो फंगाई मशरूम ये सब पर रिसर्च करते हैं? मिस्टर कनर दास. सो ए इज द राइट आंसर. यस मनीषा, कार्तिकेय, अदिजा, नागलक्ष्मी, ऑल राइट. Set a new director, the first mycologist to head the institute. है ना, mycologist study of fungi, molds, yeast, mushroom, etc. The next is what is the theme of World Tourism Day 2025? Tourism and sustainable transformation, है ना. B is the right answer to this question. 27 September, है ना. Let's move on. India's first hydrogen highways. देखो एक्चुअली क्या, we are not talking about hydrogen fueled, hydrogen based cars, buses, ऐसा की बात हो रही है. तो हाइड्रोजन रिफ्यूल भी तो कराने का प्रोविजन हो चाहिए. हाइड्रोजन हाईवेज मींस वेयर यू विल फाइंड not only petrol pump but also hydrogen refueling station.
दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन हाईवेज। तो अब चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, ये सब की बात हो रही है, तो अब उसका भी तो ये होना चाहिए रिफ्यूलिंग का प्रोविजन या चार्जिंग स्टेशन टाइप, है ना। तो हाइड्रोजन का जो है, सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया समिट हुआ था, है ना, इवेंट हुआ था, उसमें बताया गया। सो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन हाईवे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना। सी इज द राइट आंसर। एंड हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली ग्रीनर, है ना, लेस पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू द अदर सोर्स। अच्छा, लेकिन एक बात पता होना चाहिए, आप ये मत बोलिए कि हाइड्रोजन एकदम कंप्लीटली परफेक्ट होता है, ठीक है, बिकॉज कोई भी चीज ऐसे भी कंप्लीटली परफेक्ट तो होता नहीं, यू नो एवरीथिंग। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च करोगे हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स होती है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इसका आउटपुट क्या आता है, तो उसमें लिखेंगे वाटर वेपर, ठीक है। अब हम लोग को लगता है कि वाटर वेपर तो हार्मलेस है, बट ऐसा नहीं है। आप सर्च करना, इज वाटर वेपर अ ग्रीन हाउस गैस? यस, इट इज वेरी डेंजरस ग्रीन हाउस गैस। तो अगर लॉन्ग टर्म में इफ एवरीवन स्टार्ट्स यूजिंग, तो हो सकता है मे बी इट माइट आल्सो बी प्रॉब्लमेटिक, हाँ, बट कंपैरेटिवली बेटर है, राइट, दैट्स द आइडिया। बट अगेन वही चीज है, 100% परफेक्ट तो कोई चीज होती है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल वी आर मूविंग टुवर्ड्स, तो केमिकल पॉल्यूशन होने का डर है, बैटरी से चलेगी एटसेट्रा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, है ना। सो एवरीथिंग, एवरी टेक्नोलॉजी हैज सम नेगेटिव्स, है ना, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। सो बी इज द राइट आंसर। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, मनीषा वी रमेश, है ना, ये बुक है ना। Yes. Next is, where is the only launched India Ship Technology Center located? Yes, it will disbalance the ratio of gases. Yes. हाँ, तो वही हम लोग बताते हैं जब भी whenever we talk about pollution, है ना, harm, greenhouse gas, etc. The most important thing is controlling the consumerism. Unnecessary wastage नहीं करना, unnecessary, है ना, that's the idea behind this. है ना, so Visakhapatnam, C is the right answer. India Ship Technology Center inaugurated at RMU Visakhapatnam campus, Indian Maritime University campus in Visakhapatnam. C is the right answer. So this is Andhra Pradesh. This is Visakhapatnam. Which village in South India has become region's first solarized village? साउथ इंडिया का पूछा जा रहा है, इसीलिए साउथ इंडिया का फर्स्ट सोलराइज विलेज, सो कोंडा रेड्डी पल्ली इन तेलंगाना, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड सेकंड इन इंडिया, सो इज द फर्स्ट वन, गो एंड फाइंड आउट, दैट्स होमवर्क। नेक्स्ट है, व्हाट विल व्लादिमीर पुतिन अनाउंस रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर बाय 2030? हाँ, इसका फर्स्ट का मोधेरा है, राइट, यस, somebody had answered me in Gujarat. So yeah, the right answer is option C, world's first closed fuel cycle nuclear system, which will save, actually which will utilize the wastage, ठीक है, reuse the spent fuel, है ना। So of course क्या होगा, it is actually, it will reduce the, drastically reduce the need for uranium supplies. C is the right answer. What is the primary goal of Swachh Shahar Jodi, है ना, clean cities pairs? So cities are being paired. The right answer is option C, facilitate mentorship between cities for solid waste management. Yes, Karthikeya, Krishi, Vanisha, you all are right. Which of the following cities did India defeat to win SAFF Under 17 Championship 2024? Right answer is option B, Bangladesh, है ना, ठीक है। So that's what you should know. So this is all about today's class. आज मुलाकात होती 8 PM पे, I'll be meeting you, where we'll be discussing the static GK, ठीक है। So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you.